Good evening. Find a quiet place and take a seat, gather yourselves. We'll start in a couple of minutes. Good evening, namaste. Welcome to Idanim and welcome to this meditation this evening. Today we are meditating on Anapanasati. And I'll briefly explain what Anapanasati is, what the importance is, and then we get into the actual meditation. So for this conversation, switch on your cameras so we can speak face to face. I'll give you half a minute. Okay, you can switch on your cameras now. Somi, hello, good to see you. All right, so meanwhile, and whilst others are arranging for the cameras, let's understand what Anapanasati is. And it's one of the simplest meditation techniques or processes with it relates to the breath. What we simply do in this meditation is focus our attention on our breath. Very simple. However, it has quite a few mystical benefits, if you will. First of all, why breath? Why do we choose breath to focus on? There are other processes that choose something else, another object as a point of focus, attention, concentration, and so on. Why breath? It so happens that we're breathing all the time. Breath is with us all the time, no matter where we go. So one of the physical benefits of choosing breath over any other object is that it's available everywhere, anywhere, anytime, no matter where we travel. We don't have to depend on anything external. We don't have to carry anything extra with us.
there's a deeper reason behind choosing breath as well. And that is the physical body is kept alive through breath, through prana, if you will. Prana is the life force that goes within the body through breath. So when we choose to connect to the life force itself, or when we start bringing our attention to life force itself, what we bring our attention to grows. Anything that we bring our attention to grows in us. Anything which is life force, which is so natural, so rhythmic, and we put our attention into that, then all the other manifestations of life, which have different shapes and forms, um, lose meaning. If lose meaning is a little far-fetched, they reduce in meaning, reduce in importance in a way. And we know that all our suffering is because we're attached to different objects here and there with less or more intensity. It's time that we now gather ourselves, bring our attention back to the very life force that we're breathing, and stay there. It also means we, after living our life for whatever 8, 10 hours, 12 hours of work and going into complications, going into complexities of life, we make it very simple. We wind down, right? We roll back. We come back from the variety of life to a very small, simple space, which is breathing. Okay. So that's the importance. It is used for concentration. I used to use Anapanasati for concentration as a kid in my school days, and it definitely benefited me. So from concentration to really making the mind focused, one-pointed, to calming the mind, everything is available in one simple, single technique, that is Anapanasati. Okay. So here are the instructions. So I'll share the instructions first. Then we get into the meditation. At the end of the meditation, we'll have maybe 5-10 minutes if we have any sharings or questions. So the instructions are simple. Our eyes will be closed. We'll be sitting up straight. And I'll instruct you for that in a bit. We'll bring our focus, our attention to the nostril, to the entrance of the nose. And we'll start seeing, start observing, noticing, simply noticing. There's no tensed observation or there's nothing of intensity here. A simple noticing observation of the incoming breath and the outgoing breath, and the incoming breath and the outgoing breath. That's it really. So stay on the nostril, stay on the nose entrance area, and observe that the breath is coming and the breath is going. And it's at its natural pace. Okay? All right. So sit up straight, keep your spine straight. If anybody has any back problems, you can lean onto something. Take some back support. Gently close your eyes. Relax your shoulders. Relax your jaw. Now we'll take 3 deep breaths and start relaxing any part of the body that is tensed, that has any kind of tension, or if you're holding any part of the body or muscles, just loosen them. So take a deep breath. And as you exhale, relax the body. Relax the body. Another deep breath. And as you exhale, relax the body. Loosen the tension in the body, in the muscles, in the joints.
And one more time, take a deep breath and exhale with relaxation of the body and the mind. Beautiful. Now let the breath be normal, natural. Let it come back to the natural, normal breath. And ever so gently bring your attention to the nostril, to the entrance of your nose. Observe that the breath goes in and the breath goes out. Observe what impact does it have in the nostril area. How does the incoming breath feel? Is it warm or is it cold? How does the outgoing breath feel? Is it comparatively warmer? Where does the breath touch? Does it touch at the entrance of the nostrils? Inside the nose? Does the outgoing breath touch inside the nose, at the entrance? Maybe slightly also at the upper lip area. Just stay with that subtle touch of the breath, subtle sensation of the incoming and the outgoing breath. That's it. Simply that. There's nothing else in the whole wide world for us to attend at the moment. Except the reality of our own breath, the experience of our natural, normal breath.
Very beautiful. It may happen that thoughts come up and the mind engages in the thoughts. That's okay, it's natural. We've kept the mind active during the day, maybe. So it's gathered some momentum when it's getting into thoughts. Very lovingly, very gently, bring the mind back to the nostril. There's no need to fight, no need to suppress anything. Very gently. The work of thoughts is done during the day. This is our time to enjoy our own presence. Bring the attention back to the nostril. And observe, notice the incoming breath and the outgoing breath. With every breath, let your attention focus more and more
Let your attention stay more and more on the breath. There might be noises around. There might be other places in the body where maybe there is pain or the throbbing of the heart where the attention goes. That's okay. Our job is to bring it back very gently, lovingly to the nostrils. And with every breath, let the attention stay more and more with the breath. Let it settle in this place. If you happen to feel drowsy or sleepy, it could be because the mind is exhausted, the body is tired, the mind is bored. Maybe just sit up straight again. Take 2 or 3 deep breaths. Wake yourself up. And bring the attention back to the nostril for a very simple activity of observing the breath. Be fully with the breath. Enjoy for a few more minutes.
Beautiful. Very nice. Now we'll gradually start coming out of the process. Rub the palms of your hands against each other. So you create some warmth. Give the warmth to your face and your eyes. And then slowly, when you feel like, start opening your eyes. Okay. That concludes the meditation process. Now, some of you might want to just keep quiet, stay silent. Perfectly okay. You might have some questions or sharings. So we'll open the house for the sharings now. You can either type something on the chat box or unmute yourselves to speak. नमस्ते सर। Namaste, Somi. सर, मैं एक्चुअली हर क्लास में मैं बात करती हूँ और मैं चुप बैठ नहीं सकती हूँ। सॉरी, मैं हर बार क्लास में क्वेश्चंस करती हूँ ताकि बहुत सारी चीजें चलती है और मैं चुप बैठ नहीं सकती सर। इतनी देर बैठना भी मेरे लिए काफी कब से बोलने का वो हो रहा है। एंड सर, पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ उस वक्त। तो मैं उस चीज को कैसे कंट्रोल करूँ? Somi, very honest of you, first of all, कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे होता है मेरे साथ और ये कईयों के साथ होता होगा, हर कोई पूछ नहीं पाता। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन से तो आपको सपोर्ट होगा, ये चीज़ थोड़ी शांत होने लगेगी धीरे धीरे और कुछ राज जो हैं यूनिवर्स के वो खुलने लगेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल्सो अंडरस्टैंड, सी इफ यू कैन सी दिस, कि बाहर कुछ होता है और उस वजह से मैं चिड़चिड़ी होती हूँ जो हम कह रहे हैं। तो बाहर कुछ हो जाता है, सही कहना ये होगा कि बाहर कुछ होता है और उस वजह से मेरे भीतर का चिड़चिड़ापन जग जाता है। बाहर की वजह से हम चिड़चिड़े नहीं होते। अगर कोई कुआं खाली है, उसमें हम बकेट डाल रहे हैं, तो उससे बाहर क्या आएगा बकेट में? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कुआं खाली है। अंदर पानी है तो पानी निकल सकेगा। तो बाहर के सिचुएशंस जो हैं वो सिर्फ एक निमित्त है हमारे भीतर क्या है उसको दिखाने के लिए। तो ये देखना शुरू करें कि अच्छा, चिड़चिड़ापन मेरे भीतर है किसी वजह से, है ना, जमा हो गया है, कुछ हुआ होगा पास्ट में, बहुत बार चीजें हुई होंगी, धीरे धीरे जमा हो गया। अब हम जब ये मेडिटेशन करते हैं तो हम खुद पे काम कर रहे हैं ताकि ये चीज सॉल्व हो जाए। इज इट मेकिंग सेंस? यस। सो अगेन, वेरी courageous of you. Thank you for asking the question. आंसर और एक सवाल है। मैं अभी 1-2 दिन से मतलब जैसे मेडिटेशन थोड़ा और ज्यादा डीपली में जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट अभी शायद कल या परसों आपका एक मेडिटेशन कर रही थी जहाँ आपने बताया था नदी बह रही है और वैसा करके। तो हाँ। वो इमेजिनेशन जो था सर, वो रियलिटी में फिर जब आते हैं तो अलग रहती है। तो उस चीज से फिर मैं कैसे डील करूँ? वो अलग दुनिया चली जाती है, ये अलग दुनिया है। हाँ। हाँ। तो मैं डील कैसे करूँ? ऑल्दो हम एक अलग दुनिया में जाते हैं, बट वो अलग दुनिया में जाना हमारे अंदर कुछ बदलाव लाता है। और हम जब दोबारा इस दुनिया में आते हैं तो बदल कर आते हैं। आप उस दुनिया को यहाँ ना ले आए, उस बदलाव को सिर्फ ले आइए। वो बदलाव आपके साथ आ ही जाएगा यहाँ पे, और वो बदलाव काम करेगा, है ना। तो सर, इमेजिनेशन में जो कहा गया है, नदी और ये सब, वो तो सपोर्ट है मेडिटेशन के लिए। उसके जरिए आपको जिस मेडिटेशन में ले जाया गया वो आप में बदलाव लाता है। और आप जब इस दुनिया में दोबारा आते हैं तो बदलाव के साथ आते हैं।
तो फिर वही मैं बोल रही हूँ ना, फिर जब इस दुनिया में आती तो वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ, तो अभी बाकी है ना, पूरा निकला नहीं है चिड़चिड़ापन, थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है। हमारी लाइफ है, आई एम हम करते रहेंगे काम उस पर। सॉरी सर, मैं हर बार क्वेश्चंस पूछती हूँ, नहीं मैं नहीं, रह नहीं दैट्स पाती हूँ। परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। परफेक्टली ओके, एज लॉन्ग एज आप थैंक यू। इनको, आप इसको दिल से ले रहे हैं जवाब को भी, इट्स नहीं, मैं परफेक्टली एक्चुअली ओके। हर बार हर स्टूडेंट नहीं बोलता है, मैं पहले हाथ खड़ा करती हूँ क्योंकि हम्म मेरे साथ दिमाग में काफी चीजें चलती है और मेरे को हम्म आंसर नहीं मिलते ना सर, तो मैं स्टक हो जाती हूँ। हम्म। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। कोई नहीं, कोई नहीं, ओके। गुड गुड ओके, इवनिंग सर, थैंक यू गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। Drona says, गुड what is the इवनिंग ideal विशाल जी। time for meditation at the beginning? गुड द्रोणा, इवनिंग विशाल जी। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कौन बात करें? मैं विभा। हाँ विभा, एक मिनट, हाँ। मैं द्रोणा का ले लूं, और रुद्रा ने भी हाथ ऊपर किया हुआ है, उनका सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। द्रोणा पूछ रहे हैं, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर मेडिटेशन? द्रोणा, एनी टाइम इज अ गुड टाइम फॉर मेडिटेशन. Depending on what meditation you're doing, there are certain meditations that are recommended to be done in the morning and some in the evening. If you're coming to Idanim, I think these are structured in such a way कि morning के morning में होते हैं, evening के evening में. So yeah, keep coming, morning 7 a.m., evening 7 p.m. और जो है meditations करते रहिए. Rudra, you want to say something? हेलो सर। हाँ, hello. सर मेरा क्वेश्चन डेडलाइन से जुड़ी हुई, से जो एंग्जाइटी जुड़ी होती है डेडलाइन से, या कोई चीज़ पास आ रही, फॉर एग्जांपल मेरा एग्ज़ाम है और ऐसे लगातार एग्ज़ाम्स काफ़ी लगे हुए थे, तो वो चीज़ फ़ील कभी-कभी होने लगती है कि अगर हम्म प्रोसेस में होते हो, लगातार डेडलाइन्स होती हैं, एक के बाद हम्म एक के बाद एक, एक हर 1 हम्म महीने, हर 2 महीने बाद एक एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस? ऐसे बहुत एंग्जायटी, आई वुड नॉट से कि नेगेटिव हमेशा होता है, लेकिन थॉट आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग आप करने लगते हो, फिर आप बहुत हाँ आगे चले जाते हो, तो आप फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ना कि और नेगेटिव ना भी हो तो कन्फ्यूज़न और बहुत सारे हाँ, थॉट्स इस तरह से आने लगता है। सर कैसे डील करना है इन सब चीज़ों से? yes, 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 yes. See, one thing that I do now is, and that has helped me greatly, is keep checking before taking any action or before making any decision. Action और decision से पहले ना, keep checking कि हमारा state of mind क्या है. जी सर। हमारा state of mind अगर बेचैन है, if the state of mind is not quiet, जी wait for सर। a bit. Don't take an action, don't take a decision. Quiet, let the state of the mind be a little quiet. Maybe do जी, some breathing techniques, और कुछ कर लो, थोड़ा सा क्वाइट हो जाने दो, देन टेक अ डिसीजन और अ एक्शन, है ना? जी सर। जी सर। नाउ विथ डेडलाइन क्या होता है, वी फील कि इट्स अर्जेंट, ये डेडलाइन आने वाली 2 महीने बाद आने, दिस डेडलाइन इन 2 months एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट नाउ. वी डोंट एक्चुअली टेक एक्शंस ऑन इट ऑल द टाइम, यस सर। right? So the anxiety is in the period when we are not taking actions, not when we are यस actually सर। taking good actions. यस सर। यस। Although anxiety gives us a different message, it makes us feel ki, Are, I am doing too much. I'm not. यस सर। When I'm not doing too much or not doing what is required, that's when anxiety kicks in. So if you're taking the appropriate actions at the right time, anxiety doesn't have space. यस सर। The mind is quiet, calm, focused, right? यस Play with this a little and let me know how it goes with you. सर। यस सर, श्योरली। Okay. All right, Sir, Dhruv. can Yeah. can I have one small question? Like, suppose like if I take break, like एक लंबे सोच सेशन होता है एक पढ़ने का या स्टडी का, हाँ और फिर उसके बाद कुछ हाँ ब्रेक चाहिए होता है क्योंकि बॉडी थक जाती है उस चीज को, माइंड थक हाँ जाता है। हाँ तो हाँ. what to do in that 15-20 minute period where I want to take rest or before starting another session? Good question. Good question. Check with your body. If the body Yes, is, because you have sat maybe for 2-3 hours at a stretch, body अगर थोड़ी सी tired है, maybe do some stretching. yes, sir. हाँ, stretching करके body थोड़ी loose हो जाएगी. Yes, Check with the mind. If it is racing, wind down.
If it has gone lethargic, then do something to activate the mind. Yes, sir. So switch कर दो. And once you switch, you will see that you're fresh again in 15-20 minutes to work and do more. Thank you, Did sir. that make sense? Yes, sir. Certainly. Thank you, Good sir. questions, Rudra. Very good questions. Thank you, sir. Okay, we'll take the last question. Vibha wants to ask. Vibha ji, yes. आप अनम्यूट करके बात करें विभा जी. हाँ मैं म्यूट को मैं हाँ हाँ स्वयं बोल सकते हैं अनम्यूटिंग। अभी. विशाल हेलो। हाँ जी. विशाल क्या है ना कि कई बार मैं इतना गुस्सा हो जाती हूँ, मैं 3-4 दिन तक परेशान रहती हूँ और मुझे रीजन नहीं समझ में आता कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। और गुस्सा इतना ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मैं सामने वाले को सुनने को भी तैयार नहीं होती हूँ। और मैंने ये बात आपसे पहले भी पूछी थी, आपने मुझे बताया सॉल्यूशन, पर ना ये मैं देख रही हूँ कि 3 महीने में 6 महीने में इस तरह का मुझे गुस्सा आ ही जाता है। मैं रीजन को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि आपने अभी बोला कि मेरे अंदर भरा हुआ है गुस्सा। आउटर रीजन का एक्सटर्नल फैक्टर कभी भी नहीं होते हैं। ये राइट बात मुझे आपकी समझ में आई। और राइट बहुत राइट. ज्यादा नेगेटिविटी अगर मेरे अंदर फिल है तो बहुत लंबा प्रोसेस ले रहा है, क्योंकि मैं 8-9 महीने से जुड़ी हुई हूँ ये मेडिटेशन से, आपके इडानी से। और मैं रेगुलर ही पूरे दिन में भी जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ तो मैं ये आपकी अनापना या कुछ भी थोड़ा सा एक लगा लेती हूँ, 5 मिनट का भी लगाऊं तो मुझे लगता है। और विशाल, मेरे को अपना एंगर कंट्रोल नहीं होता है, मैं बहुत हाँ ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ। राइट. देखिए एक दो चीजें हैं. एक तो कुछ आप गहरे प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके भीतर का गुस्सा निकले. आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकती हैं अगर आपको मौका मिलता है और बॉडी अलाउ करती है तो. मैं जिसमें विशाल, आप मैं डांस करती हूँ, और मैं योगा जाती हूँ, तो मैं हाँ तो पट उससे हूँ, मैं फिट हूँ। उससे उससे आपके मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, तो जो ग्रंथियों में आपके गुस्सा जमा हो गया है ना, वो निकलने में आसानी हो जाएगी अगर आप फिजिकली कुछ एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग और लाइक फुल्ली ब्रिंगिंग इट आउट ऐसे करते हैं तो. और दूसरी बात, इन चीज़ों में टाइम लग सकता है कि पर पता नहीं कितनी पुरानी वृत्तियां बन गई है ना हमारी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है. इट्स ओके. और मेरे को फ्यूचर का डर भी है विशाल। अब जैसे मेरे बेटे की शादी होने वाली है, लोग बोलते हैं उसकी वाइफ आएगी तो, और मैं सोचती हूँ कि उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, मुझे नहीं पता कि क्या है। और फ्यूचर नहीं करना चाहिए, पर आ जाती है, मैं कभी कभी हो जाती हूँ परेशान। हाँ ठीक है भाई, बड़े दिल से परेशान हो चाहिए, पूरी तरह से हो जाइए. जब आपको ध्यान में आ जाए कि अरे मैं हम्म, तो परेशान हो रही हूँ, फिर खुद को टाइम दीजिए कि ठीक है, मैं और 10 मिनट के लिए परेशान रहना चाहती हूँ और बहुत सिंसियरली परेशान रहना चाहता हूँ. 10 मिनट तक कोई हंसना नहीं, कुछ नहीं. 10 मिनट दे दीजिए, पूरी तरह से परेशान रहिए, फिर बाहर आ जाइए. बट वो 10 मिनट सिंसियरली करना, ओके। सिंसियरली परेशान रहना. मैं ये गुस्से पे भी करूंगी अपना, अगर मुझे गुस्सा आना है तो गुस्सा 10 मिनट तो पूरा गुस्सा निकालना है, हाँ, किसी और पे नहीं निकालना, अपने खुद आप पे पे करना. निकालना। हाँ, अपने आप पे नहीं. हम्म, बस गुस्से के साथ बैठना है, गुस्से को महसूस करना है आपने. किसी पे निकालने की जरूरत नहीं है, बट पूरी तरह से बैठना है कि चलो 10 मिनट में ठीक से देख लेते हैं क्या हो रहा है गुस्से में, बॉडी में क्या हो रहा है, कहाँ आग लग रही है बॉडी में, कहाँ पे गर्म फील हो रहा है, कहाँ पेट में कैसे हो रहा है, सर में कैसे हो रहा है. ठीक से देख लेना है उसको, है ना. हाँ, थैंक यू, आई विल वेलकम फॉलो योर वेलकम. एडवाइस। हाँ थैंक्स। जी हाँ जी हाँ जी. ओके भाई. बाय। All right, everybody, that brings us to the conclusion of today's meditation process. You have a beautiful evening, you have a good day and a good week. I'll see you sometime soon. Namaste.